welcome back. Today we are going to discuss about the tools of recombinant DNA technology. Generally हमें पता है recombinant DNA कैसे बनता है. Recombinant DNA is formed when the vector recombinant DNA. What is the actually means of recombinant DNA? When a foreign DNA is linked with a vector is known as the recombinant DNA. We going to form the recombinant DNA. फर्स्ट टूल जो है इसका यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस थी वो थी हेंट्यू. whose functions depend upon a different specific DNA nucleotide sequences was isolated and characterized 5 years later. ठीक है. It was seen that Hindu always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. The specific base pair sequences is known as a recognition sequence for Hindu. Now अब क्या हुआ, जो हमारी हिंटू थी हमने देखा कि जो ये हिंटू है ये कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ऐसा नहीं कि हर कहीं कर रहा है कट, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट में ही कट कर रहा है डीएनए को, डीएनए सीक्वेंसेस को. नाउ फिर हमने देखा द स्पेसिफिक देयर आर द स्पेसिफिक बेस पेयर और सीक्वेंसेस आर देयर, जिसको हमने बोला रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस फॉर हिंटू. वी हैव टू नाउ हमें पहले पता चला हिंटू के बारे में. फर्स्ट अगर क्वेश्चन अराइज दैट विच इज़ द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज द हिंटू. नाउ we know today more than 900 restriction enzymes that have been isolated over 230 strains of bacteria. Yes. आज हमें जो है 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता है जो कि हमने आइसोलेटेड किया है 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से. नाउ ई कोलाई इज कम्स फ्रॉम generally this E is for genus, CO for species, R for strain, that is R113 in case of ECORI. Journal इसको हम बोलते हैं ECOR first, but I said in so many time ECORI because I have forget it. I is a Roman number, and this Roman number now अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रोमन नंबर क्या बताता है. रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ये एक ऑर्डर है कि किस एंजाइम से आइसोलेट किया है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से. जैसे कि इससे आगे होगा तो ई और सेकेंड लाइक दैट, अगर हमने सेकेंड स्ट्रेन से निकाला है. Restriction enzyme belong to a large class of enzyme called nucleases. Nucleases as an एक restriction enzyme is a part of nucleases. अब nucleases is further two types, that is exonucleases and endonucleases. Remove nucleotides from the end of DNA. Make a cut at specific position within the DNA. क्या है ये जो exonucleases है ये रिमूव करता है एंड से DNA को, मतलब रिमूव करता है एंड ऑफ डीएनए लाइक 5-3 में वर्क करेगी, मतलब एक्सोन्यूक्लियस अगर एंड में काम कर रहा है तो. एंड एंडोन्यूक्लियस मेक अ स्पेसिफिक पोजीशंस like endonucleases are in biotechnology we more use endonucleases. This E. coli first is also example of endonucleases. Palindromic nucleotide sequence. I make the difference in exonucleases and endonucleases. If you want, then I will discuss it. Exonucleases. This enzyme remove the nucleotide from the terminals either from 5' or 3' ends of the DNA molecule. Simple. We discuss it in definition also. Exonuclease. Endonuclease, it cuts the DNA at a specific positions of a nitrogenous bases within the length of DNA expected. Form a sticky ends and form a blunt and sticky ends.
have no specific role in blocking the entry of pathogens like that. Exonuclease does not have a lag period before their activity, while as endonuclease have the lag period before their activity. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. नाउ अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है क्या? पैलिंड्रोमिक, let's see the example first. First example, you see that let's move from 5 dash to this, ठीक है. यहाँ पे GAATTC एंड नीचे GAATTC. हम इसको सीधा पढ़ रहे हैं और जब हम इसको इस वाले स्ट्रैंड में उल्टे से पढ़ रहे हैं तो ये दोनों सेम आ रहे हैं. लाइक डैट कि अगर ये वाला जो है सीक्वेंस ऐसा चलेगा तो इसका मतलब है दूसरा वाला सीक्वेंस ऐसा चलेगा. तो हमें देखना है कि अगर ये और ये बिल्कुल सेम आता है, इसको सीधा पढ़ के और इसको उल्टा पढ़ के अगर ये दोनों सेम आते हैं देन इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. जैसे कि इस केस में GAATCC GGATCC. नाउ अब हमने यहाँ से पढ़ा, अब यहीं को देखो GGATCC like that. Definition: palindromic sequence is a certain sequence of DNA that read the same, whether read from 5 dash to 3 dash direction or from 3 dash to 5 dash direction. या तो तुम 5 to 3 dash direction से पढ़ लो या तो 3 to 5 dash direction से पढ़ लो. बहुत जो है ये सेम बताएगा, 3 to 5 और 5 to 3 like that. And you can note down this examples also, and the actions or the action of restriction enzyme I can discuss it later classes. That's all for today. Thank you. Please like and subscribe my channel.